अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब लिसनिंग कर रहे हैं हम लैंग्वेज सर्ट की और इसका आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 4। ये है प्रैक्टिस टेस्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 4 किए, चारों पार्ट्स किए, टेस्ट 2 के और टेस्ट 1 के। अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि लिसनिंग जो है इस पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, नहीं तो फेल हो जाएंगे। लैंग्वेज सर्ट की लिसनिंग बहुत मुश्किल होती है। बार बार वीडियोस को देखें, बार बार लिसनिंग को समझें, इसको आसान ना लीजिएगा। इसके 26 क्वेश्चंस आइट्स के 40 क्वेश्चन से भी मुश्किल होते हैं लिसनिंग के। तो ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, फेल होने के बाद मुझे ना कहिएगा कि बताया नहीं। तो आज भी 1 वालों के लिए है जी लैंग्वेज सर्ट, इसमें लिसनिंग करेंगे हम और इसका है पार्ट 4। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कोई भी बात हो, पूछनी हो तो कमेंट कर दें, तो इंशाल्लाह उसका मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो चलते हैं जी पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में हमारे पास है जी कन्वर्सेशन, जो भी बातचीत होगी, और उसमें हमें दिए हुए हैं 6 ऑप्शंस, मतलब 6 क्वेश्चंस हैं, उनके आगे 3-3 ऑप्शंस हैं, उनमें से जो बेहतर है, जो ठीक आंसर है, वो सिलेक्ट करना है। लिखा हुआ यू विल हियर अ कन्वर्सेशन, एक आप गुफ्तगू सुनेंगे। यू विल हियर द कन्वर्सेशन ट्वाइस, 2 दफ़ा आप वो कन्वर्सेशन सुनेंगे। चूज द करेक्ट आंसर्स, इनमें से करेक्ट जो आंसर्स हैं वो चूज करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है मार्क टुक हिज स्टाफ अवे बिकॉज। मार्क अपने स्टाफ को ले गया या उसको साइड पे कर दिया, क्यों? दे नीडेड ए रेस्ट, कहीं दूर ले गया, उनको अच्छी रेस्ट चाहिए थी। ही वॉज प्लीज्ड विद देम, या उनसे वो बड़ा खुश था। तीसरा ऑप्शन है ही वांटेड टू ट्रेन देम, या उनको ट्रेनिंग देना चाहता था। इनमें से एक आंसर ठीक होगा, वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हु डिसाइडेड वेयर टू गो फॉर द वीकेंड। ये वीकेंड पे जो गए थे और किसने ये डिसाइड किया था कि कहाँ जाना है, वेयर टू गो फॉर वीकेंड। पाउला ने, मैरी ने, टेड ने, इन तीनों में से किसने ये कहा था कि कहाँ जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज हेलिना फील अबाउट द चॉइस ऑफ ट्रिप। हेलिना कैसा उसको लगता है कि ये जो चॉइस है ये ट्रिप की, कि यहाँ जाना चाहिए या इस ट्रिप पे जाना चाहिए, ये कैसा है उसे महसूस। अम्यूज्ड, बड़ी खुश है इससे। वरीड, परेशान है। सरप्राइज या हैरान है इससे। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क एंड हिज स्टाफ ट्रेवल्ड बाय। मार्क जो मालिक है इनका और उसका स्टाफ है, इन्होंने कैसे ट्रेवल किया, प्लेन से, ट्रेन से या कार से, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच डिड मार्क पे फॉर द ट्रिप। मार्क जो इनका ये मालिक है, जो इनको लेके जा रहा है, उसने कितना पे किया ट्रिप के लिए। लेस देन ही एक्सपेक्टेड, जितना उससे उम्मीद की जा रही थी उससे कम। मोर देन ही वांटेड टू, जितना वो पे करना चाहता था उससे ज्यादा किया। $2000 या $2000 पे किया उसने, एग्जैक्ट अमाउंट उन्होंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड मार्क से वाज द मोस्ट एंजॉयबल पार्ट ऑफ द ट्रिप। मार्क क्या कहता है, कौन सा सबसे मजे वाला जो पार्ट था ट्रिप का, कौन सा था। अब विजिट टू द आर्ट गैलरी, आर्ट गैलरी में गए, वो मजे का था। गोइंग टू द थिएटर, वो थिएटर में गए जहाँ ड्रामा वगैरह होता है, बंदे ड्रामा करते हैं, वो पार्ट अच्छा था। एंड इवनिंग एट द बैलेट, या बैलेट में जो इवनिंग थी, ये बैलेट का तो मुझे नहीं पता, बॉल का पता है जहाँ डांस वगैरह होता है। तो ये 6 क्वेश्चन है, इनके मैंने आपको जो नीचे हैं ऑप्शंस वो भी बता दिए, समझा दिए सारा। अब हम इसकी लिसनिंग करेंगे और आपने 1 बाय 1 आंसर इसके बताने हैं कौन से हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ जी पार्ट 4। Listening, Part 4. गौर से You सुनिएगा। will hear a conversation. You will hear the conversation twice. Choose the correct answers. Hello, Mark. How was your trip? It was great. How did you hear about it? You're famous, you know. I was listening to the radio and they said, after the local news, an interview with Mark Gately, who has just returned from a rather special trip with colleagues. But then a friend phoned and I missed the interview. So tell me about it. I wanted to do something special with the people who work for me, so I took them on a weekend away. Oh, yes, a training weekend of some kind connected with their jobs. I went on a computer course last month. Not really connected with their actual jobs, more a reward. A way of letting them know I appreciate their hard work. What a nice idea. It's so unusual for directors to show the people who work for them that they're grateful. So where did you decide to take them? I didn't. I mean, I'd have probably chosen a weekend by the seaside or something like that. But I thought, let them make the decision. And what did they agree on?
Agree. There were so many different ideas. Jim wanted to go on an adventure weekend. Paula suggested a boat trip. Finally, my assistant Marie, she's always so practical, said we should let Ted choose. He's been at the company longer than anyone. That seems fair. Yes, well, he suggested a cultural weekend. You know, theatre visits and so on. Not a bad idea, don't you agree? A cultural weekend? Ted, you think you know people, but you don't. I thought he was only interested in sport. So where did you go? I saw an advertisement in a travel agent's, Culture in the Capital, so that's where we went. Gosh, that's a long way to drive. Or did you fly from the local airport? Yes, much too far to drive, and there were no convenient flights. We had the choice of coach or train. A few people thought the coach journey was too long, so we took the fast train. Sounds nice. Where did you stay? Le Grand, a 4-star hotel in the city centre, really luxurious. Gosh, the whole trip must have cost you a fortune, Mark. At least a couple of $1,000s. Nothing like as much as that. The travel agent offered a special deal. I was amazed at how reasonable it was. And anyway, my workforce is more than just money to me. What was the best part of the trip? The theatre? Do you know, I was sure it would be the opera or the ballet, but for all of us, it was the modern art gallery. At first sight, the building was nothing special, but inside it was fantastic. If you get the chance, go and see it. जी, अब मैं आपको इसके आंसर्स बता दूं जो मुझे याद रहेंगे उसके मुताबिक। मार्क टुक ऑफ हिज स्टाफ बिकॉज वो कहता है कि मैं इनसे बड़ा प्लीज था। प्लीज का लफ्ज़ तो इसने इस्तेमाल नहीं किया, इस अप्रिशिएट का लफ्ज़ इसने इस्तेमाल किया था, तो उसने यही आएगा अप्रिशिएट प्लीज था उनके साथ क्योंकि उसके लिए काम करते हैं। हु डिसाइडेड वेयर टू गो फॉर द वीकेंड, पहले उसने आई थिंक पौला का जिक्र किया है कि ये इससे बात हुई थी, उसने कोई मशवरा दिया तो हमें पसंद नहीं आया। फिर मैरी ने कहा कि टेड को एक्सपीरियंस रखता है तो टेड से पूछते हैं, तो फिर टेड ने जो है डिसाइड किया और ये कल्चरल थी कोई ट्रिप, मुझे अब याद नहीं रहा तो वो क्या कल्चर थी। तो उस पे ये जो हेलिना है ये जो पूछ रही है बातचीत कर रही है तो ये बड़ी सरप्राइज हुई, कहती हाँ वहाँ गए थे कल्चर पे गए थे, तो इस वजह से वो सरप्राइज हुई है। तो ये इसका सी है। पहले का आंसर जो है वो आएगा बी, दूसरा आएगा सी और तीसरा आएगा ये वाला सी। और चौथा जो है मार्क एंड हिज स्टाफ ट्रेवल बाय ट्रेन, मेरा ख्याल है यही है, बाद में कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन देखते हैं जी, हाउ मच डिड मार्क पे फॉर हिज ट्रिप, और इसने इसका आएगा ए लेस देन ही एक्सपेक्टेड, उसने बताया $1,000 या कितने, उसने कहा नहीं इतने भी नहीं दिए। और व्हाट डिड मार्क से वाज द मोस्ट एंजॉयबल ट्रिप, और वो बताता है विजिट टू द आर्ट गैलरी कि ये मोस्ट एंजॉयबल था मेरे लिए। अब इसको दोबारा सुनिएगा और दोबारा सुनने के बाद जनाबे वाला मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी इसकी। Hello, Mark. How was your trip? It was great. How did you hear about it? You're famous, you know. I was listening to the radio and they said, after the local news, an interview with Mark Gately, who has just returned from a rather special trip with colleagues. But then a friend phoned and I missed the interview. So tell me about it. I wanted to do something special with the people who work for me, so I took them on a weekend away. Oh yes, a training weekend of some kind connected with their jobs. I went on a computer course last month. Not really connected with their actual jobs, more a reward. A way of letting them know I appreciate their hard work. What a nice idea. It's so unusual for directors to show the people who work for them that they're grateful. So where did you decide to take them? I didn't. I mean, I'd have probably chosen a weekend by the seaside or something like that. But I thought, let them make the decision. And what did they agree on? Agree. There were so many different ideas. Jim wanted to go on an adventure weekend. Paula suggested a boat trip. Finally, my assistant Marie, she's always so practical, said we should let Ted choose. He's been at the company longer than anyone. That seems fair. Yes, well, he suggested a cultural weekend. You know, theatre visits and so on. Not a bad idea, don't you agree? A cultural weekend? Ted, you think you know people, but you don't. I thought he was only interested in sport. So where did you go? I saw an advertisement in a travel agent's, Culture in the Capital, so that's where we went. Gosh, that's a long way to drive. Or did you fly from the local airport? Yes, much too far to drive, and there were no convenient flights. We had the choice of coach or train.
A few people thought the coach journey was too long, so we took the fast train. Sounds nice. Where did you stay? Le Grand, a 4-star hotel in the city centre. Really luxurious. Gosh, the whole trip must have cost you a fortune, Mark. At least a couple of $1,000. Nothing like as much as that. The travel agent offered a special deal. I was amazed at how reasonable it was. And anyway, my workforce is more than just money to me. What was the best part of the trip? The theatre? Do you know, I was sure it would be the opera or the ballet, but for all of us, it was the modern art gallery. At first sight, the building was nothing special, but inside it was fantastic. If you get the chance, go and see it. जी, जितने आंसर मैंने आपको बताया बिल्कुल वो ठीक थे। दूसरी दफ़ा सुनने पे मुझे भी ज़्यादा समझ आ जाती है, आपको भी आ जाती होगी। और इसका आंसर ट्रेन ही था, ठीक है जी, जिसके बारे में मैं श्योर नहीं था। तो मुझे उम्मीद है आपको भी समझ आ गई होगी। ये चौथा पार्ट भी हमने कर लिया, टेस्ट जो प्रैक्टिस था 3। इंशाल्लाह चौथा जो टेस्ट है हमारा वो भी आएगा, और चौथे के बाद मेरे पास मटेरियल इतना नहीं है, तो बाकी हम रीडिंग भी करेंगे, राइटिंग भी करेंगे। सारी वीडियोस 1 बाय 1 आती जाएंगी। मैं वीज़ाज़ के मुतल्लिक भी आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको स्टडी के मुतल्लिक भी एक होल पैकेज आपको इस चैनल पे मिल रहा है। और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा। दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।